Hello students, today we are going to start present perfect continuous tense and after it past perfect continuous tense and then future tense. So let's start. In this present perfect tense, we have to express an action that begin at moment in past and still in process. It means like we were doing some work in past like 2 hours 3 hours yesterday, and that work is still in process. That work is continue we are doing. For example, I have been reading for 3 hours. It means 3 hours before this time. 3 hours is of past. So in past we have started this work, until now we are doing the same work. At which place we have the action which is started in past and still in continuation, we will use present perfect tense. Here we use since and for. Since for point of time and for period of time. Point of time like 2002, like 2 o'clock, like 5 o'clock, and 4 we will use like 2 hours, 5 hours, 10 hours, 10 month, 10 years. Clear? Second point, to describe an action which has already finished but its effects continues. Like you have been eating something but you have complete your eating but still your stomach is filled. Clear? My mother has been busy all the day and that's why she is now on her bed at last. It means by doing work all the day she got tired, that's why she is in the bed. Clear? The effect of the working the complete day still continues. Next will be past perfect tense. Past perfect continuous tense. Uses to describe an action which continued in past and continued up to that moment or stopped just before the next incident. Like here in past we have two incidents. It means we have also simple past tense in the same sentence. Nitin had already been suffering from viral for 2 days when he consulted a doctor. So here this simple past tense is used. Clear? This is had been suffering. Had been suffering. Had been suffering means past perfect continuous tense. So let's start future tense. Simple future or future indefinite tense. Subject, will shall, first form, object. We have already discussed in tenses table. Uses to predict. Predict means भविष्यवाणी करना. What we think will happen. हम क्या सोचते हैं कि क्या होगा, ये सब बताने के लिए we will use future tense, simple future tense. She will help you in your studies. जब भी हम कोई फ्यूचर की बात करते हैं तो मोस्टली probably we use simple future tense. Second point, after verbs or verb phrases like be, sure, think, expect, hope, believe, etc. अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस ही यूज़ करेंगे. शी इज़ श्योर शी विल क्लियर द टेस्ट. शी इज़ श्योर दैट शी विल क्लियर द टेस्ट. वी बिलीव वी विल पुल थ्रू वी शैल पुल थ्रू द क्राइसिस ऑफ कोरोना. हमें यकीन है कि हम कोरोना से पार हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इस टेस्ट में.
Then we have future continuous tense. Subject will or shall be first form ing and object. To show continuation in future or to show distant future, we will use future continuous tense. For example, India will be launching a new satellite very soon. यानी कि लॉन्च करने जा रहा है. डिस्टेंट फ्यूचर, थोड़ा सा दूर फ्यूचर की बात करते हैं हम. माई फादर विल बी अराइविंग नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक मेरे फादर आ रहे हैं. तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर की बात तो रहेगी. जब कंटिन्यूटी हो, हमें लगता है कि सेंटेंस में कोई कंटिन्यूएशन है, देन वी विल यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. देन वी हैव future perfect tense. Subject will or shall have third form plus object. Will shall have plus third form object. I hope it's easy for you to see. Subject will shall have third form plus object. Uses to express an action expected to be completed in future time. कोई काम फ्यूचर टाइम में, एक्सपेक्टेड फ्यूचर टाइम में होने की संभावना है, वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस, इसमें कंप्लीशन की फीलिंग आती है, कंप्लीशन ऑफ वर्क. वी शैल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस to the next month. Sorry, here will be to the next month. तो नेक्स्ट मंथ तक हम शिफ्ट हो चुके होंगे, ऐसा कि हम इस टाइम तक अपना ये काम कर चुके होंगे. तो इस सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. एंड लास्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट विल शैल have been first form ing object since or for. Uses to express an action continuing beyond a point of time in future. It means the student, for example, the students will have been studying English since Monday. यानी कि मंडे तक भी स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे होंगे. क्योंकि जब हमें पता होता है कि आपका एग्ज़ाम है मंडे को 9 बजे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मंडे 7 o'clock तक भी आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे. द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. यानी कि मान लो कि आपके पेरेंट्स आपको घर में छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं और फिर वो गेस करते हैं कि बच्चे 2 घंटे हो गए, अभी तक बच्चे खेल रहे होंगे. कंटिन्यूएशन होगा, उस दौरान हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. सो आई होप आई हैव क्लियर यू टेंसेस. सो बी रेडी फॉर द एक्सरसाइज एंड डू एक्सरसाइज as much as possible for you. So till the time we meet next, happy learning, keep loving language and literature. Thank you.